ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। अहं ध्येयमन्त्रं वदामि, मया सह मिलित्वा वदन्तु। एक्शन्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्, संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। गतदिने वयं यत् पठितवन्तः तस्य एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः। अहं शिक्षिका अस्मि। अहं शिक्षिका अस्मि। अहं शिक्षिका आसम्। अहं छात्रा आसम्। अहं महिला आसम्। अहं शिशुः आसम्। शर्मिला महोदय, भवती का आसीत्? शर्मिला महोदय, भवती का आसीत्? हरि ओम्। इशिता मंडल महोदय, भवती का आसीत्? हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते वा? अहम् इदानीं शिक्षिका अस्मि। अहं छात्रा आसम्। भवती का आसीत्? भवती का आसीत्? पूर्वं का आसीत्? अहं प्राथमिकविद्यालयस्य छात्रा अहं शिशु आसम्। अहम् उच्चविद्यालयस्य छात्रा आसम्। वदतु। अहं शिशु आसम्। पुनः वदतु। भवती शिशुः आसीत्। सम्यक्। अहम् आसम्। अहम् आसम्। अहं शिशुः आसम्। अहं पूर्वं विद्यालयस्य छात्रा आसम्। अहं पूर्वं चञ्चला आसम्। इदानीम् अहं धीरा अस्मि। अहं पूर्वं चञ्चला आसम्। भवती पूर्वं का आसीत्? अहं शान्ता आसम्। अहं बुद्धिमती आसम्। भवती का आसीत्? भवान् कः आसीत्? शुभं महोदय, भवान् कः आसीत्? अहं पूर्वे विद्यालयस्य छात्रः आसम्। सम्यक्।
पूर्वम् आसीत् किं किम् आसीत् बाङ्ग्लादेशः पूर्वं भारते आसीत् पूर्वं नरेन्द्र मोदी महोदयः इदानीं प्रधानमन्त्री अस्ति पूर्वं मनमोहन सिंहः प्रधानमन्त्री आसीत् नरेन्द्र मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री अस्ति पूर्वं मुख्यमन्त्री आसीत् ममता बनर्जी महोदया इदानीं मुख्यमन्त्री अस्ति पूर्वं का आसीत् पूर्व ममता बंद्योपाध्याय महोदया पूर्वं रेल मंत्री आसीत् उत्तमं समीचीनम् एवं कः आसीत् पूर्वं भारते स्वामी विवेकानन्दः आसीत् पूर्वं किम् आसीत् पूर्वं भारतवर्षे विक्रमादित्य इति राजा आसीत् समीचीनं पूर्वं नालन्दा विश्वविद्यालयः आसीत् पूर्वं गुरुकुलम् आसीत् एवं भारते पूर्वं किम् आसीत् गृहे किम् आसीत् वदन्ति वा किम् आसीत् पूर्वं मम गृहस्य समीपे वटवृक्षः आसीत् इदानीं नास्ति उत्तमं समीचीनम् इतोपि आसीत् किम् आसीत् पूर्वं मम गृहे दूरवाणी न आसीत् इदानीं दूरवाणी अस्ति सम्यक् पूर्वं कः यथा पूर्वं रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयः आसीत् पूर्वं कालिदासः आसीत् एवं पूर्वं कः आसीत् पूर्वं वङ्गदेशे शरच्चन्द्र चट्टोपाध्यायः इति लेखकः आसीत् उत्तमं समीचीनम् अनन्तरम् अपरः कोऽपि वदतु भारते किम् आसीत् पूर्वं गृहे किम् आसीत् आगे छिलो এখন নেই आसीत् आगे छिलो এখন নেই गृहे ग्रामे नगरे कोलकातायां भारते पूर्वे गृहे ताम्रकलश आसीत् समीचीनम् अनन्तरम् एकवचने आसीत् बहुवचने आसन् आसीत् आसन् पूर्वे गृहे बालः आसीत् बालाः गृहे पूर्वे गृहे प्रदीपाः आसन् दीपाः आसन् सम्यक् अनन्तरं किं मैडम बहुवचने आसन न आसन स्क्रीन দেখা যাচ্ছে তো आसन यथा अहम अत्र अस्ति ईशिता मंडल महोदया बालिका आसीत् नवनीता महोदया बालिका आसीत् टिंकु महोदया बालिका आसीत् शर्मिला महोदया बालिका आसीत्
एताः बालिकाः आसन् आसीत् आसन् स्पष्टम् एकवचने आसीत् बहुवचने आसन् चषकः एकः चषकः घटी एका घटी एकः बालकः एका बालिका एकं फलम् अहं शब्दं वदामि अह अह থাকলে एकः यदि शब्दशेषे आ বা ই থাকে बालिका तननी आ বা ই থাকলে एका फलं गृहं मन्दिरं থাকলে एकम् योजयन्ति योजयन्ति अहं शब्दं वदामि छात्रः एकः छात्रः गायिका एका गायिका गायिका सेविका किं महोदय सेविका एका सेविका एका सेविका जननी एका जननी एका एका जननी जननी लेखनी एका 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 लेखनी लेखनी अध्यापिका एका अध्यापिका अध्यापिका फलम् एकं फलम् एकं फलम् एकं फलम् चित्रम् एकं चित्रम् एकं चित्रम् कूपी एका कूपी एका 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 कूपी सम्यक् अध्यापकः लिखति अध्यापकः सुधाखण्डे अध्यापकः केन लिखति सुधाखण्डेन लिखति अथवा अध्यापकः कथं लिखति अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति सुधाखण्डेन लिखति वृद्धा चलति वृद्धा दण्डेन चलति वृद्धा कथं चलति दण्डेन चलति दण्डेन चलति আমার কথা কি স্পষ্ট ম্যাডাম মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে আপনার কথা হরি ওম মহোদয় কেটে কেটে যাচ্ছে মহোদয় কেটে কেটে মাঝে মাঝে আপনার কথা কেটে যাচ্ছে हरि ओम इदानीं श्रूयते वा आं श्रूयते वृद्धा चलति वृद्धा कथं चलति वृद्धा दण्डेन चलति वृद्धा दण्डेन चलति दण्डेन चलति सम्यक् साधु बालिका दर्शयति बालिका हस्तेन दर्शयति बालिका कथं दर्शयति बालिका हस्तेन दर्शयति हस्तेन नखः नखेन खड्गः खड्गेन खड्गेन दण्डेन दण्डेन
दन्तपुच्छेन दन्तपुच्छेन चषकेन चषकेन चमसेन स्यूतेन स्यूतेन चमसेन चमसेन मार्गेण मार्गेण जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। जनाः कथं प्रयाणं कुर्वन्ति? जनाः 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 विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। सः उपनेत्रेण पश्यति। सः कथं पश्यति? सः उपनेत्रेण पश्यति। कृषकः हलेन कर्षति। कृषकः कथं कर्षति? कृषकः हलेन कर्षति। हलं हलेन, फेनकं फेनकेन फेनकेन पुस्तकं, पुस्तकेन लोकयानं, लोकयानेन उपनेत्रं, उपनेत्रेण विमानं, विमानेन व्यजनं, व्यजनेन पात्रं, पात्रेण पात्रेण तिलकं, तिलकेन सा द्विचक्रिकया गच्छति। स्त्रीलिंग शब्द द्विचक्रिका। सा कथं गच्छति? सा द्विचक्रिकया कया गच्छति। छुरिकया फलं कर्तयति। कथं फलं कर्तयति? छुरिकया फलं कर्तयति। कथं फलं कर्तयति? छुरिकया फलं कर्तयति। छुरिकया फलं कर्तयति। जनाः नौकया गच्छन्ति। जनाः नौकया गच्छन्ति। माला मालया। छुरिका छुरिकाया छुरिकया अग्निपेटिका अग्निपेटिकया अग्निपेटिकया अग्निशलाका कुञ्चिका कुञ्चिकया वर्तिकया बालिका थालिकया ध्वनिमुद्रिका ध्वनिमुद्रिकया छात्रः लेखन्या लिखति। छात्रः कथं लिखति? छात्रः लेखन्या लिखति। लेखन्या लिखति। सः दूरवाण्यां सम्भाषणं करोति। सः दूरवाण्या सम्भाषणं करोति। सः कथं सम्भाषणं करोति? सः दूरवाण्या सम्भाषणं करोति। सः अङ्कन्या चित्रम् अङ्कयति। सः कथं चित्रम् अङ्कयति? सः अङ्कन्या चित्रमङ्कयति। दूरवाण्या लेखन्याः लेखन्या अङ्कन्याः अङ्कन्या मार्जन्या योजन्या योजन्या वर्णलेखन्या वर्णलेखन्या सूच्या घट्या व्यूहशोधन्या
एकवारम् अत्र पश्यन्तु। तृतीया विभक्ति कथम्? हस्तः हस्तेन, यदि अकार था कैसे से विसर्ग हस्तः हस्तेन एन जो হবে, যদি আকার হয় নৌকা, বালিকা, গায়িকা, নায়িকা, পাচিকা, তাহলে কি হবে? নৌকয়া, বালিকয়া, গায়িকয়া। दूरवाणी শেষে ই দীর্ঘ ই, दूरवाण्या। भगिनी भगिन्या भगिन्या। जननी जनन्या जनन्या। सुतः पुंलिंगे स्यूतः चालकः ग्रन्थः हस्तः। नपुंसकलिंगे मुखं पात्रं फेनकं फलं। स्त्रीलिंगे माला वर्तिका बालिका कुंचिका। स्त्रीलिंगे लेखनी योजनी कूपी भगिनी एवं। स्पष्टम्? हाँ, आम् महोदय। स्पष्टम्। वदतु। आम् कटः आम् कटेन कटः कटेन नासिका कटः कटेन नासिका कटेन श्रूयते वा? नासिका नासिकया बेल्लनी बेल्लन्या दन्तः दन्तः दन्तेन धनं धनेन प्रवेशिका प्रवेशिकया जिह्वा जिह्वया उपनेत्रम् उपनेत्रेण दण्डः दण्डेन बालिका बालिकया सुफेनकं सुफेनकेन सूची सूच्या पिञ्जः पिञ्जेन ध्वनिवर्धकं ध्वनिवर्धकेन। अहं हस्तेन लिखामि, अहं दण्डेन ताडयामि। अनन्तरम् अहं कः वदति? नवनीता महोदय वदति वा? परिवर्तनं करोतु। अहं नवनीता महोदय वदतु। अहं हस्तेन लिखामि। अनन्तरम् अहं তারপরেরটা বলুন। ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে? না, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। তুহিন চক্রবর্তী। आम् महोदय। अहं हस्तेन लिखामि, अहं दण्डेन ताडयामि, अहं मुखेन वदामि, अहं द्विचक्रिकया गच्छामि, अहं नासिकया जिघ्रामि, अहम् अङ्गुल्या दर्शयामि, अहं पादेन क्रीडामि। उत्तमं, समीचीनं। सः स्नानं करोति। अहं वाक्यं वदामि, योजयतु। सः जलं स्नानं करोति। सः जलेन स्नानं करोति। सम्यक्, उत्तमं। सः जलेन स्नानं करोति। अनन्तरं द्युति महोदये भवती वदतु। बालकः चमसः क्षीरं पिबति।
बालकः चमसः वदतु बालकः चमसेन क्षीरं पिबति। रामः हस्तः चित्रं नयति। रामः हस्तेन चित्रं नयति। सम्यक्। सीता खेदः पुस्तकं पठति। सीता खेदेन पुस्तकं पठति। जननी दर्वी पाकं करोति। जननी दर्व्या पानं करोमि। पाकं करोति। अनुजः द्विचक्रिका विद्यालयं गच्छति। बालिका द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। अनन्तरम् अहं वदामि, सर्वे मिलित्वा परिवर्तयन्तु। सः नेत्रं पश्यति। सः नेत्रेण नेत्रेण पश्यति। सः कर्णः शृणोति। सः कर्णेन शृणोति। शृणोमि। सा हस्तः गृह्णाति। सा हस्तेन गृह्णाति। माता वस्त्रम् आच्छादयति। माता वस्त्रेण आच्छादयति। समीचीनं। छात्रः लेखनी कवितां लिखति। छात्रः लेखन्या कवितां लिखति। आरक्षकः दण्डः चोरं ताडयति। आरक्षकः दण्डेन चोरं ताडयति। वयं सर्वे मुखं वदामः। वयं सर्वे मुखेन वदामः। अहं शब्दं वदामि, वाक्यं रचयतु। छुरिका, एकं वाक्यं रचयतु। अहं छुरिकया फलं कर्तयामि। समीचीनं। पुष्पम्। अहं पुष्पम् आनयामि। पुनः वदतु। अहं पुष्पम् आनयामि। अहं पुष्पेण अञ्जलिं ददामि। अहं पुष्पेण अञ्जलिं ददामि। अहं पुष्पेण पूजयामि। अहं पुष्पेण मालां करोमि। सम्यक्। कन्दुकम्। पुनः एकवारं वदतु महोदय। कन्दुकम्। अहं कन्दुकेन क्रीडामि। दन्तकूर्चः। अहं दन्तकुर्चेन दन्तधावनं करोमि। उत्तमम्। अपरा कापि वदतु। दूरवाणी। दूरवाणी। अहं दूरवाण्या कथं वदामि। अहं दूरवाण्या वार्तालापं करोमि। अहं दूरवाण्या वार्तालापं करोमि। समीचीनम्। एवं तृतीया विभक्तिः। बालकः आनन्दः क्रीडति। बालकः आनन्देन क्रीडति। एरकम आनंद कष्ट सुख दुःख सुखेन जीवति। बालकः दुःखेन विद्यालयं गच्छति। सुख दुःख कोप अनुकंपा स्नेह। सः भक्तः अनुकंपया पश्यति। जननी पुत्रं पालयति। जननी कथं पुत्रं पालयति? स्नेहेन पुत्रं पालयति। एवं तृतीया विभक्तिः। तृतीया विभक्ति कदा भवति? साधनं। यदा अहं चमसेन खादामि, अहं हस्तेन ददामि, अहं कूप्या जलं पिबामि, अहं द्रोण्या जलम् आनयामि, अहं लेखन्या लिखामि। एवं साधनम्। अहं लिखामि, तस्य साधनं किं? लेखनी। अहं लेखन्या लिखामि। स्पष्टम्? आम् महोदय। अनन्तरम् अहं
जनकेन सह आपणं गच्छामि। अहं केन सह आपणं गच्छामि? अहं जनकेन सह आपणं गच्छामि। जनकेन सह, सह शब्दयोगे अपि तृतीया विभक्ति। अहं शिक्षकेन सह पठामि। रामः अध्यापकेन सह श्लोकं वदति। माता पुत्र्या सह आपणं गच्छति। पुत्री जनन्या सह आपणं गच्छति। स्पष्टं? सह शब्दयोगे का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः। सह शब्दयोगे तृतीया विभक्तिः। एवं सह शब्दयोगे वाक्यानि रचयति वा? वाक्यं रचयति। अहं मित्रेण सह आपणं गच्छामि। उत्तमम्। अपरः कोऽपि? अहं भगिन्या सह दूरदर्शनं पश्यामि। समीचीनम्। इतोपि? अपरः? अहं स्यूतेन सह विश्वविद्यालयं गच्छामि। স্তুতেন সহ হয় না? আমি ব্যাগের সঙ্গে যাব, এটা হয় কি? আমি মায়ের সঙ্গে যাব, বাবার সঙ্গে যাব, বন্ধুর সঙ্গে যাব, শিক্ষকের সঙ্গে যাব হয়, কিন্তু ব্যাগের সঙ্গে যাব হয় না। অন্য ভিন্নমেকं वदतु। सुदामा कृष्णेन सह क्रीडति। उत्तमम्। अहं मित्रेण सह महाविद्यालयं गच्छामि। साधु। इतोपि? अहं पञ्चव्यञ्जनेन सह अन्नं खादामि। इतोपि? सह, सह शब्दयोगे। अहं भगिन्या विना न खादामि। भगिन्या विना न खादामि। अहं मित्रेण विना विद्यालयं न गच्छामि। यथा सह शब्दयोगे तृतीया विभक्तिः, समानरूपेण विना शब्दयोगे अपि का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः। विना शब्दयोगे अपि तृतीया विभक्तिः। स्पष्टम्? विना भवन्तः केन विना किं किं न करोति वदन्ति वा? केन विना किं किं न करोति? না বেশ শোনা যাচ্ছে না। हरि ओम्। भवन्तः केन विना किं किं न करोति? अहम् अध्यापकेन विना न पठामि। अहं मित्रेण विना विद्यालयं न गच्छामि। अहं लेखन्या विना न लिखामि। अहं द्विचक्रिकया विना आपणं न गच्छामि। अहं ध्यानेन विना न पठति। सम्यक्। उत्तमम्। अहं
प्रातः श्लोकं पठामि। अहं प्रातः श्लोकं पठामि। अनन्तरम् अल्पाहारं करोमि। अहं श्लोकं पठित्वा अल्पाहारं करोमि। अहं श्लोकं पठित्वा अल्पाहारं करोमि। पठामि पठित्वा। रामः विद्यालयं गच्छति। रामः कुत्र गच्छति? रामः रामः विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति। गच्छति गत्वा। गच्छति गत्वा। पुस्तकं पठति अनन्तरं लिखति। पुस्तकं पठित्वा रामः लिखति। पूर्वतनकार्यं यदस्ति तत्र पठित्वा, खादित्वा, हसित्वा एवं भवति। खादति, खादित्वा, हसति, हसित्वा हसित्वा लिखति, लिखित्वा लिखित्वा गायति, नीत्वा नित्या दत्त्या दत्त्या खादति, खादित्वा खादित्वा, हसति, हसित्वा हसित्वा क्रीडति, क्रीडित्वा पिबति, पीत्वा मिलति, मिलित्वा मिलित्वा पृच्छति, पृष्ट्वा पृष्टा त्यजति, त्यक्ता त्यक्त्वा, त्यजति, त्यक्त्वा वक्ता त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, त्यजति, त्यक्त्या त्यक्त्वा, नयति, नीत्वा नित्या पश्यति, दृष्ट्वा दृष्ट्या पश्यति, दृष्ट्वा। एवं भवन्तः किं किं कृत्वा किं किं कुर्वन्ति वदन्ति वा? अहं पुस्तकं पठित्वा क्रीडामि। अहं क्रीडित्वा जलं पिबामि। अहं जलं पीत्वा स्नानं करोमि। एवं भवन्तः किं किं कृत्वा किं किं कुर्वन्ति? अहं स्नानं कृत्वा पूजयामि। समीचीनम्। अपरः कापि वदतु। अहम् अध्ययनं कृत्वा भोजनं करोमि। समीचीनम्। इतोपि अपरः कोऽपि सः वदति वा? सः रुद्रचण्डी पठित्वा कालीपूजा करोति। सम्यक्। अहं वाक्यद्वयं वदामि, योजयतु। सः पुस्तकं पठति, स्नानं करोति। पुस्तकं पठित्वा स्नानं करोति। अहं रामायणं पठामि, ज्ञानं प्राप्नोमि। परिवर्तयतु। अहं रामायणं पठित्वा ज्ञानं प्राप्नोमि। समीचीनम्। सा श्लोकं वदति, आसन्दे उपविशति। सा श्लोकं वदति, आसन्दे उपविशति। सा श्लोकं वदित्वा आसन्दे उपविशति। उदित्वा उक्त्वा वदति, उदित्वा वदति, उक्त्वा अपि उक्त्वा वदति न चेत् उक्त्वा आसन्दे उपविशति। लता गृहे क्रीडति, पठनार्थम् उपविशति। लता गृहे क्रीडित्वा पठनार्थम् उपविशति। अहं रोटिकां खादामि,
निद्रार्थं गच्छामि। अहं रोटिकां खादित्वा निद्रां गच्छामि। पुनः वदतु अहं रोटिकां खादामि खादामि निद्रार्थं गच्छामि। वदतु अहं रोटिकां खादित्वा निद्रार्थं गच्छामि। गायकः गीतं गायति आनन्दितः भवति। गायकः गायकः गीतं गीतं गीत्या गीत्वा आनन्दितः भवति। आनन्दितः भवति। आनन्दितः भवति। इदानीं वदतु सुपर्णमहोदया किं किं कृत्वा किं किं करोति? सर्वेपि एकमेकं वाक्यं वदतु। सुपर्णमहोदया पुस्तकं पठित्वा स्नानं करोति। एवं किमपि सा किं कृत्वा किं करोति? वदतु। अहं पाकं कृत्वा खादामि। अहं ज्ञानम् अर्जित्वा अन्ये ध्यानं करोमि। अहं भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। ओ उत्तमं, समीचीनम्। भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। भोजनं कृत्वा शयनं करोमि। उत्तमम्। अनन्तरम् अपरः कोऽपि वदति वा? अहं व्याकरणं पठित्वा दूरदर्शनं पश्यामि। साधु, सम्यक्। इदानीम् अद्य वयं प्रत्येके বাক্যদ্বয়ম দুটো করে বাক্য প্রত্যেকে বলবো। অনেকদিন হয়েছে আমরা সংস্কৃত শিখছি। যেটা মনে আসবে, যেমন মনে হয়, যে বাক্য রচনা করতে পারবেন, সহজ, খুব কঠিন ভাবার কিছু নেই, দুটো করে সেন্টেন্স। अहं पूर्वं वदामि। देशस्य नाम भारतवर्षम्। मम पिता आपणं गच्छति। দুটো করে সেন্টেন্স বলবেন। कः वदति पूर्वं? देविकाजी वदतु। अहं प्रातः 8 वादने उत्तिष्ठामि। उत्थाय हस्तमुखं प्रक्षाल्य चायं पिबामि। अनन्तरं वदामि किम्? सम्यक् सम्यक् उक्तम्। बालकेन आनन्देन वदतु। बालकः आनन्देन लड्डुकं खादति। अहं दूरदर्शनं अनन्तरं पश्यामि। कः आनन्देन लड्डुकं खादति। पुनः वदतु। बालकम् आनन्देन बालकः आनन्देन लड्डुकं खादति। अहम् अनन्तरं दूरदर्शनं पश्यामि। सम्यक्। महोदय अहं वदामि। साधु साधु, सम्यक्। महोदय अहं वदामि। अवश्यं वदतु, सर्वे वदन्तु। अद्य अहं
कॉलेज स्ट्रीटे गच्छामि। हा अवश्यं वदतु वदतु वदतु। अद्य अहं संस्कृत महाविद्यालये गच्छामि। कॉलेज स्ट्रीट स्ट्रीट इंग्लिश शब्द स्ट्रीट इति स्थानम्। मम गृहे सङ्गणकः अस्ति। मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। वदतु मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। पुनः वदतु मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। मैडम एरपरे विगत हरि ओम् श्रूयते वा? मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। आं श्रूयते श्रूयते। मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहे सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहे दूरदर्शनम् अस्ति। दूरदर्शनमपि अस्ति। अस्तु सम्यक् उत्तमम्। अस्तु साधु सम्यक्। अपरं कोऽपि वदति वा? अहं वदामि किं महोदय? अवश्यं वदतु। मम नाम तुहिनः। अहं विवेकानन्द इति महाविद्यालये पठामि। इतोपि एकं character। अहं विवेकानन्द इति महाविद्यालये पठामि। मम नाम विवेकानन्द। मम नाम अस्तु मम नामद्वारा एकं वाक्यम् अस्तु भवतु। अहं वदामि वा? अवश्यं वदतु। एकः तृष्णार्तः काकः आसीत्। सः जलार्थम् इतस्ततः भ्रमति। सः जलम् आहरणाय दूरं गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति। सम्यक् उत्तमम्। अपरं कोऽपि? शिशु उच्चैः स्वरे रोदति। माता सन्तान कृते चिन्ता करोति। चिन्तां करोति। इतोपि? আচ্ছা পরের দিনে বাড়ির কাজ হচ্ছে। বৃক্ষ সম্পর্কে 5টা সেন্টেন্স লিখবেন। বৃক্ষः কিম কিম দদাতি, বৃক্ষে কিম अस्ति। কোন রকম কোনো ইংলিশ বা বাংলা কিছু দেখে বা ভেবে নয়। বৃক্ষः अस्ति, বৃক্ষে ফলানি সन्ति, বৃক্ষः फलं ददाति। एवं लघु लघु वाक्यं स्वयं संस्कृतेन विचिन्त्य लिखतु। दीर्घं वाक्यं न। इतोपि माता किं किं करोति तद्विषये लिखन्तु। 10 वाक्यानि। वृक्षविषये 5 वाक्यानि, माता विषये 5 वाक्यानि। स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। अस्तु ম্যাডাম পরবর্তী ক্লাসে এটা সংস্কৃত কি হবে? পরবর্তী ক্লাসে আগামী কক্ষায়াম। আচ্ছা। আর ম্যাডাম আরেকটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন ওই ডেইলি রুটিনটা বলা। লিখিতवती वा वदतु तर्हि शृणोमि। মানে কিছু কিছু জায়গায় একটু সমস্যা হচ্ছে সেই কারণেই। वदतु वदतु
कुत्र समस्या? अहं प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि, उत्थाय षट्वादने 6:00 उत्तिष्ठामि, उत्थाय हस्तमुखं प्रक्षाल्य चायं पिबामि। अनन्तरम् अहं मम कन्यां निद्रातः ঘুম থেকে ডাকি কি হবে? নিদ্রাতঃ উত্থাপ্য, উঠিয়ে, ঘুম থেকে জাগিয়ে। উত্থাপ্য, নিজে হলে উত্থায়, কাউকে উঠিয়ে সেটা হচ্ছে উত্থাপ্য। উত্থাপ্য এইটুকুই? ঘুম থেকে ডাকি কন্যাম নিদ্রাতः উত্থাপ্য, এখানে কি দাঁড়িয়ে নাকি উঠিয়ে, উত্থাপ্য মানে উঠিয়ে। এবার আপনি যেটা বলতে চাইছেন বলুন। আচ্ছা, আমি যদি শুধু উঠিয়ে না বলি, শুধু বলি ঘুম থেকে ডাকি, এখানে যদি থামতে চাই তাহলে কি হবে? উত্থাপয়ামি, নিদ্রাতঃ উত্থাপয়ামি। আচ্ছা, उत्थापयामि, तत्पश्चात् पाकशालायां गत्वा पाकं करोमि, अतः परं पाकशालां गत्वा, पाकशालायां न पाकशालां, पाकशालां गत्वा पाकं करोमि, अतः परं कन्यायै स्वल्पाहारं ददामि, तत्पश्चात् स्नानं करोमि, एवं कन्यां स्नातुं प्रेषयामि, अतः परं कन्या भोजनं दास्यामि, अहमपि स्वल्पाहारं करोमि कन्यायाः सह, तत्पश्चात् कन्या सह, कन्या আজকে তৃতীয়া পড়া হলো কন্যা, কন্যা, বালিকা, বালিকয়া, কন্যা সহ অল্পাহারম করো। कन्याया सह स्वल्पाहारं करोमि, तत्पश्चात् कन्या विद्यालयं गच्छामि, अतः अहं त्वया कन्या सह विद्यालयं गच्छति, कन्या विद्यालयं गच्छति, अतः अहं त्वया सह लोकयानमुद्दिश्य बहिर्गच्छामः, अनन्तरं गृहम् लोकयानार्थं बहिर्गच्छामः, अहं गच्छामि, त्वया सह अहं गच्छामि। कर्ता কিন্তু এখানে अहं, त्वया सह अहं लोकयानार्थं। আমরা দুজন বেরোই, সেক্ষেত্রে দুজন হবে না, আমি হবে। কর্তাটা আপনি তো আমিই রেখেছেন, अहं त्वया सह गच्छ, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, त्वया सह। তো কর্তা একটাই আছে, আমি। अच्छा, अहं त्वया सह लोकयानम् उद्दिश्य बहिर्गच्छामि, अनन्तरं लोकयानात् उद्दिश्य न, लोकयानार्थं, लोकयानम् उद्दिश्य, মানে বাসে ওঠার জন্য, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, লোকয়ানম কি বলতে চাই? হ্যাঁ, অথবা লোকয়ানার্থম, লোকয়ানার্থম। अनन्तरं गृहम् आगत्वा हस्तमुख प्रक्षाल्य पूजां करोमि, पूजां হয় না, আগত্য, आगत्य তাই ফলা। आगत्य हस्तमुखं प्रक्षाल्य पूजां करोमि, पूजां कृत्वा अवशिष्ट गृहकार्यं समापनं करोमि, मध्याह्न गृहकार्यं समापयामि, मध्याह्ने 2:00 मध्याह्न भोजनं करोमि, तत्पश्चात् किञ्चित् विश्रामं करोमि, दूरवाणीं पश्यामि,
सार्धचतुर्वादने मम कन्या विद्यालयतः गृहे आगच्छसि। गृहम् आगच्छति। गृहम् आगच्छति। हम्म, ताम् अतः तां किञ्चित् स्वल्पाहारं ददामि। स्वल्पाहारं कृत्वा कन्यां नीत्वा तां ददामि न भवति, तस्यै ददामि। तस्यै এখানে চতুর্থী হবে, তস্যৈ দদামি। तस्यै ददामि। अच्छा, स्वल्पाहारं कृत्वा कन्यां नीत्वा उद्यानं गच्छामि। तत् स्थानतः आगम्य चायं पीत्वा वयं पाठे नियुक्त भवामः। सार्ध अष्टवादने सा গীতম গায়তি। রেওয়াজ করাকে কি গীতম গায়তি বলা যায় না অন্য কোনো টার্ম আছে? গীতাভ্যাসম করোতি। গীতাভ্যাসম গীতাভ্যাসম করোতি। अहम ताम पार्श्वे तार पार्श्वे तस्या पार्श्वे उपविशामि। अनन्तरं भोजनं कृत्वा वयं निद्रां गच्छामः। उत्तम, साधु साधु। अन्यपि लिखितवन्तः वा? कापि कोऽपि लिखितवान् लिखितवती? अस्तु, আজকে এতাবৎ পর্যন্তম। এই মাসটা আমার একটু ক্লাস নিতে অসুবিধা হবে, আমি হয়তো প্রত্যেক সপ্তাহে 1 ঘন্টা করে ক্লাস নিতে পারবো, আবার তারপরে কিছু ক্লাস আবার আমি নিয়ে নেবো এপ্রিল মাসের শেষে গিয়ে। এপ্রিল মাসের 25 তারিখ পর্যন্ত একটু আমার ক্লাস নিতে প্রবলেম হবে। अस्तु, শান্তি মন্ত্রেণ সমাপয়ামः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। शुभरात्रि। शुभरात्रि।